कूलिंग है। हम इसको बैंड कर दिया गया है, इसके लिए जो एयर एक्टिवेट की जा रही है तो रिकवर हो। For billions of years, an interaction between the ocean, land, and atmosphere has shaped our climate. A key part of this interaction is carbon dioxide, or CO2. In this view of Earth, we see carbon dioxide being absorbed through the seasons. The darker the green, the higher the concentration of CO2. When plants on land and phytoplankton in the ocean grow, they take in CO2 and release oxygen. This process is called photosynthesis. When these carbon-rich plankton and plants die, they are buried deep in the ground and in the bottom of the ocean, taking the CO2 with them. Over time, some of that buried carbon becomes fossil fuels. Coal, oil, and natural gas. Our use of fossil fuels has transformed modern life. In this view, yellow is for urban areas, red is for roads, blue is for shipping lanes, and green for air corridors. We rely on fossil fuels for nearly everything, from transportation to building to food production. Every time we burn these fossil fuels, we take carbon out of the ground and put it into the atmosphere. Our energy use is radically tipping the carbon balance. Data spanning the last 400,000 years show that carbon dioxide levels have fluctuated. But during that time, CO2 always remained below 300 parts per million. In the 1950s, CO2 levels started skyrocketing, and they will soar even higher if we continue business as usual. This rapid increase in CO2 is dramatically changing Earth's climate and ocean. We are ill prepared for the consequences. Increased CO2 is changing the ocean's chemistry. Data collected from ships crisscrossing the globe indicate the ocean is becoming more acidic. Ocean acidification is beginning to dissolve the shells of many creatures, including those at the base of the ocean's food webs. The effects will ripple through our fishing communities to the billions of people that rely on food from the ocean for their survival. More CO2 in the atmosphere increases Earth's temperature. In this data set, the darker the red, the greater the change in average temperature since 1940. CO2 is a heat-trapping gas that acts like a greenhouse, keeping the air inside warm and moist. Warmer global temperature threatens plant and animal life. Blooming and migration cycles are changing. Coral bleaching events are becoming a common occurrence, destroying coral reefs around the world. Diseases that flourish in warmer weather are spreading. Warmer global temperature fuels more powerful storms, hurricanes, typhoons, and blizzards. It also makes sea level rise, greatly increasing the damage caused by storm surges. More extreme weather, both flooding and droughts, are becoming commonplace. Habitats are changing for all species, including people. In the Arctic, sea ice is melting, permafrost is thawing. Entire villages are being destroyed by coastal erosion. Arctic cultures that have been here for thousands of years face a precarious future, as do we all. But we can confront that future by taking a look at the past. "40 years ago, our use of certain manufactured chemicals was destroying the protective ozone layer in Antarctica. The global community came together to face this complex threat.
nations agreed to ban these chemicals, and today ozone depletion has slowed. The ozone layer is expected to recover. Together, we can confront the carbon crisis. We have changed the Earth's climate and ocean by our actions, yet our actions can stem the tide. We can each commit to using less energy and to using it more efficiently. The same human ingenuity that made the Industrial Revolution can launch a new revolution, one built on sustainable energy, solar, wind, waves, even algae. The choices we make right now determine Earth's future climate. It's not too late. जैसे कि वीडियो में दिखाया है कि बहुत ज़्यादा देखनी हुई है कि डिपेंड करता है हम पे कि हम फ्यूचर कैसा कर सकते हैं सब प्रोडक्ट में। एक लास्ट एनिमेशन में आपको शो के दिखाने जा रहा था, मैं इसको वाइंड अप करूँगा। यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इसी स्लोप पे। ओके, तो गैस कीजिए कि ग्रीन कलर की जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस चीज़ का हो सकता है। जितनी भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉडी दिखाई दे रही है मूव करती हुई, ये क्या हो सकती है? इसका आपको कुछ नंबर्स भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू। और कुछ बेसिकली जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉडी का आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है, सारे के सारे प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं, राइट। बेसिकली जब भी हम एयर इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करें और एयर ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करें, कभी भी दिल्ली में से बॉम्बे में जाना तो आप एक बहुत लंबा ध्यान लगा हुआ है, तो उसमें बहुत लंबी लंबी लाइन्स भी लगी हुई है। तो एयर में कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ कितनी सारे प्लेन्स एक ही जगह से प्लेन कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। एंड इसमें जो आपको दिख रहा होगा, इसलिए दिख रहा होगा कि आपस में टकराने के एयर में कॉरिडोर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे फैंस फ्लाई करते हैं, टकराने के चांसेस बहुत लो है, राइट। मे बी फ्यूचर में हमारे पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज आए कि हम एक जो जैम है, ट्रैफिक जैम उससे बच सके और अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे पंखे लगा पाए कि हम उन कार्स को भी इसमें फ्लाई कर पाए। लेकिन अगेन एयर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पर भी करना बहुत मुश्किल है। एडवांस टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी कार का नाम सुना हो, गूगल बनाया था, ड्राइवरलेस, राइट। मे बी फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कार्स को भी स्काई में फ्लाई कर पाए, लेकिन अगेन ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा जो एनिमेशन हमें दिखाई दे रही है। It is all about my today, so thank you for being with us. Have a nice day. अगर आप अपनी फोटोग्राफ लिव मार्बल और के साथ में सेल्फी क्लिक करना चाहते तो क्लिक करके सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड कर सकते हैं, बट प्लीज कोई भी स्क्रीन को क्रॉस ना करें। थैंक यू।